Hundreds of IU students from across Odisha have been staging demonstration at the lower PMJ in Bhubaneswar for the last 3 days, seeking immediate steps by the government to fulfill their demands. A scuffle broke out between the agitating IU students with police when they tried to break a barricade and enter the assembly when proceedings were underway. Police also took several students under preventive custody. The agitating students of IUs, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy alleged that no new appointments have been created for the last 21 years. After clearing the NEET exam and completing their medical degree, thousands of IUs doctors are waiting for government employment since last several years but in vain. Though the government has appointed over 1,000 new allopathic doctors, no appointments of the Ayurveda and homeopathy doctors have been made, the protesters claimed. They've also demanded that necessary steps should be taken to open at least 500 government homeopathic and Ayurvedic dispensary seats and 30 district Ayush hospitals this year to propagate the usefulness of the medicine and create new posts for Ayurveda and homeopathic graduates. The IU students said they'll intensify the protest if the demands are not met at the earliest. A visit to the World Heritage Monument, the Sun Temple in Konark, always offers a memorable experience. Today, on the World Tourism Day, it was even a better picture out there. Large number of visitors turned up at the Sun Temple to catch a glimpse of the ancient heritage structure. On the occasion, the tourists were welcomed with flowers and applying sandalwood paste on their forehead. The authorities gave message of cleanliness while speaking to the visitors at the international tourism site. A traditional cultural awareness procession was also taken out from in front of the Sun Temple. Later, a mega cleanliness drive was launched at Ramchandi Peeth with participation from hundreds of students from the locality. The MQ-9B Predator drones of the Indian Navy have flown over 13,000 hours of missions across the Indian Ocean region from INS Rajali Naval Air Base, keeping a close watch on the entire Indian Ocean region. The aircraft has an endurance of 30 plus hours and can fly at an altitude up to 40,000 feet. Additionally, the aircraft also needs minimum maintenance requirements. These capabilities have enabled the Indian Navy to deploy the aircraft for prolonged durations at extended ranges. Listen in to what the officers have said. As previously mentioned, the aircraft with its max altitude of 40,000 feet and endurance of 30 plus hours, it has the capability to provide real-time video and can be deployed as an airborne outpost guarding the Indian borders. The current version of the aircraft has no weapon fit and is purely a surveillance platform. The MQ-9B aircraft has an endurance of 30 plus hours and can fly at altitude up to 40,000 feet. Additionally, the aircraft also needs minimum maintenance requirements. These capabilities have enabled Indian Navy to deploy the aircraft for prolonged durations at extended ranges. India has vast EEZ of 2.37 million square nautical miles, and around 80% of the world's maritime oil passes through the Indian Ocean. Indian Navy has a need to ensure the safety and security of the EEZ while ensuring the lawful use of the high seas. 15 of these aircraft will provide the Indian Navy to cost-effectively maintain a strict vigil over the areas. Flying in this aircraft in last 3 years has been a source of pride and honor for me. I have been a part of various types of missions in MQ-9B for Indian Navy.
The regional center of the India Meteorological Department in Bhubaneswar has said that there is possibility of formation of a cyclonic circulation over East Central Bay of Bengal around September 29th, and under its influence, a low pressure would form in the subsequent 24 hours. While rainfall activity would be less over the next 2 days, it will gradually increase from September 29th, informed the director of the IMD Bhubaneswar. ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ हुआ है। हाईएस्ट बारिश था नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट का नवरंगपुर में 58.0 मिलीमीटर, उसके बाद दाबोगांव नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में ही 51.0 मिलीमीटर, उसके बाद पाइकमाल बरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 50.0 मिलीमीटर। हमारा भुवनेश्वर सिटी में कुछ एरिया में वेरी लाइट रेन थंडर एक्टिविटी का साथ हुआ है। अभी हमारा सीजनल जो स्थिति है बारिश का, 1 जून से आज 27 सितंबर तक टोटल रेनफॉल उड़ीसा में हुआ है 1099.2 मिलीमीटर। इस समय तक का स्वाभाविक होता है 1135.1 मिलीमीटर, 3% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। बोध धेनकनाल झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस बारिश हुआ है। केंद्रपाड़ा नवरंगपुर में मार्जिनली डेफिशिएंट है, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक है। अभी फोरकास्ट हमारा जो है 29 का आसपास एक लो प्रेशर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में इमर्ज कर सकता है। उसका प्रभाव में लो प्रेशर भी बनने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में अभी हमारा 29 से ग्रेजुअली बारिश इंक्रीज कर सकता है और अगला 2 दिन में बारिश कम ही रहने का चांसेस है। केवल 1-2 जगह करके बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ रहेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, कलाहांडी, कंधमाल, नोआपाड़ा, गजपति, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज, देवघर, ओंगुल, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ स्थानों पर, रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में केवल 1-2 जगह में ही थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश हो सकता है। फिर कल भी बारिश कम ही रहेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, झारसीगुड़ा, सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज, बालासोर में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकता है। बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 जगह में ही बारिश रहेगा। फिर 29 से ग्रेजुअली बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है। नॉर्थ कोस्टल और एडजॉइनिंग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जैसा जाजपुर, भद्रक, बालासोर, केउंझर, मयूरभंज, ओंगुल, ढेंकानाल में मेनी प्लेसेस में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकता है। और मयूरभंज, बालासोर, मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर में 1-2 जगह में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ। फिर 30th में और स्लाइटली बारिश इंक्रीज करेगा। फास्ट में और भी बारिश स्लाइट इंक्रीज करने का चांसेस है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह करके पॉसिबिलिटी है। भुवनेश्वर सिटी में अभी पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा। कुछ एरिया में थंडर एक्टिविटी हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा 29, 30th, 1st इस समय 1-2 स्पेल्स करके बारिश का पॉसिबिलिटी है।